एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की ओर से आयोजित कोविड-19 एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, हेल्थ स्टेटस, इम्पैक्ट एंड पॉलिसी सेफगार्ड्स, कोविड-19 और सीमांत समूह स्वास्थ्य की स्थिति, प्रभाव तथा सुरक्षा उपाय, इस विषय पर आधारित चर्चा में आप सहभागी मान्यवरों का स्वागत है। आज की चर्चा के अध्यक्ष रिस्पेक्टेड प्रोफेसर सुखदेव थोराट सर, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूजीसी एंड ICSSR न्यू दिल्ली एंड प्रेसिडेंट ऑफ ASEE एसोसिएशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एसोसिएशन की मंच पर कास्ट, कोविड-19 एंड इनइक्वालिटी ऑफ केयर, लेसन्स फ्रॉम साउथ एशिया इस बुक के एडिटर्स ऑनरेबल Sangamitra Acharya ma'am, professor in the Center of Social Medicine and Community Health, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. साथ ही में आपके साथ साथ ऑनरेबल स्टीफन क्रिस्टोफर, मैरी क्यूरी पोस्टडॉक्टरल फेलो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, आप हमारे साथ उपस्थित है। आप दोनों मान्यवरों का एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। वेबिनार की आयोजन की अहम भूमिका निभा रहे हैं ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर विमल थोराट मैम, डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर, डॉक्टर गौतम कामले सर। आप सभी का एसोसिएशन की ओर से स्वागत है। अनेक राज्यों से जुड़े हमारे सहभागी जो हमारा साथ दे रहे हैं, आपका भी एसोसिएशन की ओर से स्वागत है। साथियों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं चर्चा के अध्यक्ष ऑनरेबल डॉक्टर सुखदेव थोराट सर को इस विषय की प्रस्तावना करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। Thank you very much, Vidya. I'll speak in English first and then translate into Hindi. We thank Sangamitra and the co-author for agreeing to speak on the issue of caste and discrimination during the COVID period. Both the authors have brought out a very important book on the issue of caste and discrimination in 3 countries, Bangladesh, Sri Lanka and India. And they have taken the issue of caste in these 3 countries. Bangladesh has a population of the lower caste, the former untouchable. Similarly, Sri Lanka has the Hindu former untouchable. And of course, India has the scheduled caste. So they have examined the relationship between the caste and discrimination in health services. There are a number of aspects that they have examined. I would not like to go into greater detail. They have seen the access of health services across the caste group, particularly for the Dalit. They have also examined the behavior faced by the health service provider, particularly the scavenger, the low caste who are engaged in scavenging, and so try to capture the differential behavior that they face vis-a-vis the others. So I think it's a very, very important topic. Both are very excellent scholars, and therefore we should get the inside view about the interrelation between caste, access to health services, and the discrimination. I would not like to spend more time. मैं इतना ही कहूँगा कि जो आज हमारे स्पीकर है संगमित्रा आचार्य और उनके साथी, ये उनकी जो किताब आई है The Dalit, COVID and Discrimination and Situation of the Dalit with respect to based on the caste discrimination, ये जो उन्होंने स्टडी की है ये 3 कंट्रीज के लिए की है, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, और इन्होंने 3 हिस्सों को बारे में देखा है कि जो दलित का जो हेल्थ सर्विस में एक्सेस करने में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका
उसको समझने की कोशिश की। उसके बाद जो सैनिटरी वर्कर है, लोअर लेवल के वर्कर, उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना होता है, उसकी स्टडी की। मेरा ख्याल है इसके पहले सिर्फ हम कहते आए हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है दलितों का, कुछ सर्वेज आए थे, लेकिन ये सीरियस स्टडी है। दीज आर वेरी कॉम्पिटेंट एकेडमिशियन, संगमित्रा और उनके कलीग जो है पोस्ट डॉक्टरल फेलो। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि नॉर्मल तरीके से तो दलितों का डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशन में भी उनको ये नहीं मिलती है। तो ये जो एस्पेक्ट है ये हमें सुनने को मिलेंगे। विद्या, with this preliminary remark, I pass it on to you. ओके सर, थैंक यू। अब मैं चर्चा के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी ऑनरेबल संघमित्रा आचार्य मैडम को, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय देने के लिए आमंत्रित करती हूँ लक्ष्मीकांता माने, डायरेक्टर कंटेंट कंसेप्ट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अ मीडिया कंपनी फ्रॉम पुणे और स्टूडेंट ऑफ पाली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। प्लीज लक्ष्मी मैम। हेलो लक्ष्मी मैम, आप सुन रही हो? यस मैम। लक्ष्मी मैम ने हाथ रेज किया है शायद। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हेलो लक्ष्मी मैम। Just wait a minute. Ma'am, I was unmuted. Even my video is enabled now. Now? Now I'm visible. Okay. Yeah. Namo tasya bhagavato arahato samma sambuddhasya. I pay my rich tributes to the triple gems and Param Pujya Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar. On the behalf of Association for Social and Economic Equality, which has organized today's webinar on the topic of COVID-19 and marginalized groups, health status, impacts, and policy safeguards, I hereby introduce our eminent guest and speaker for today, Professor Sangamitra Shillacharya. Ma'am Sangamitra is a professor in the Center of Social Medicine and Community Health, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She has taught at International Institute for Population Sciences during the period of 1990 to 1999 and was a director at Indian Institute of Dalit Studies, New Delhi during the period of 2015 to 2018. She has been a visiting fellow at CASS China, Ball State University, USA, UPII Manila, the Philippines, East West Center, Honolulu, Hawaii, and the University of Botswana. She's been awarded with Asian Scholarship Foundation Fellowship in 2005 and Shastri Indo-Canadian Grant in 2019-20. She has published in peer-reviewed journals on the issue of health and discrimination with focus on young people, women, and children. Her recent work includes Marginalization in Globalizing Delhi, Issues of Land, Labor, and Health in 2007, and Health, Safety, and Well-being of Workers in the Informal Sector in India, Lessons for Emerging Economics in 2019, both published by Springer. The list of achievements is too long, and we truly feel honored to have you here and listen to your profound knowledge in the given field and your thoughts on today's topic. So over to you, Sangamitra ma'am. Thank you so much, Lakshmi ji. Vidya, thank you so much. मुझे आपने आमंत्रित किया एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के मंच से बोलने का, अपनी इस पुस्तक के बारे में
कुछ बातें साझा करने का। मैं आभारी हूँ मेरे इस पुस्तक के को-एडिटर डॉक्टर स्टीफन क्रिस्टोफर, जिन्होंने बावजूद इसके कि वो ट्रैवल कर रहे थे उनके नए यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही तत्परता से इस रिक्वेस्ट को मान लिया और आज हमारे साथ हैं। मुझे ये बताते भी बहुत खुशी हो रही है कि स्टीफन हिंदी में भी काफ़ी अच्छी फ्लुएंसी के साथ बात कर सकते हैं, ना केवल हिंदी में जो उनका फील्ड स्टडी एरिया है एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। स्टीफन जी जो का काम गद्दी ट्राइब्स पे है और उनकी भाषा भी स्टीफन जी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, तो शायद इसका प्रमाण भी आपको मिलेगा जब स्टीफन अपनी बात आपके सामने रखेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी इस एसोसिएशन का कि हमें मौका दिया इस पुस्तक के बारे में आपसे अपने विचार साझा करने के लिए। शुरुआत लक्ष्मी जी ने करी है बाबा साहब के शब्दों का आह्वान करके। मैं वहीं से शायद आगे ले जाना चाहती हूँ। बाबा साहब के एक विचार जो हमें इस बात की तरफ ले जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब हम पावर की बात करते हैं तो बहुत ही साफ शब्दों में शायद उन्होंने कहा था कि जब हम मनुष्य की शक्ति के बारे में समझना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य की शक्ति निर्भर करती है शिक्षा पर, वैज्ञानिक ज्ञान का संचय करने पर, और वो सब कुछ जो उसे बर्बर न बना के उसकी कुशलता को, उसकी क्षमता को और अच्छा बनाने में सहयोग दे। तो उस शक्ति के आधार पर शायद ये कहना, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये शक्ति किन्हीं कारणों से शायद कुछ चुनिंदा लोगों के बीच ही सीमित होकर रह गई है, उनका विशेषाधिकार बन गई है, और जो बाकी लोग हैं उन्हें शायद अपनी योग्यता और दक्षता को साबित करने के लिए हमेशा एक संघर्ष करना पड़ा है, शायद करते रहना पड़ रहा है। और शायद यही वजह थी कि इस महान दूरदर्शी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम प्रयास किए जिनका शायद प्रभाव, जिनका फल शायद हम आज भोग रहे हैं। उनकी उस दूरदर्शिता ने शायद उन सीमाओं को खोल दिया जिनके कारण जो दबाए हुए तबके थे, जो दबाए हुए लोग थे, उन्होंने उनकी सोच को, उनके प्रयासों को बदलने की पूरी कोशिश की है, उनसे प्रेरणा लेकर। और शायद इसी कारण ये ज़रूरी बन जाता है इस बात को ध्यान में रखना कि संवैधानिक प्रावधान के बाद भी अगर हम आज इस मंच से और इस मंच के बाहर भी कहीं ना कहीं अगर हम असमानताओं की बात करते हैं, इनइक्वालिटी के संदर्भ में चीज़ों को समझने की बात करते हैं, तो शायद जो संविधान के निर्माता हैं जिन्होंने तमाम प्रयास किए हैं समानता लाने के लिए, कहीं ना कहीं शायद हम उन सपनों का जो उन्होंने देश के बारे में देखा था उससे कहीं ना कहीं शायद हम धोखा कर रहे हैं। और ये शायद इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कहना और समझना, क्योंकि जब तक कि हम बराबरी की बात नहीं करेंगे, जब तक कि हम असमानता को पीछे नहीं छोड़ेंगे, तब तक कि आज जो हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं उस मुख्य तौर पे अगर हम स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे को लेकर देखें तो ये अक्सर कहा जाता है, पढ़ने को मिलता है, समझाया जाता है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे असमानता की, डिस्क्रिमिनेशन की, एक्सक्लूजन की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि भाई बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, आपदा किसी पे भी आ सकती है, किसी को भी प्रभावित कर सकती है। शायद ये सच भी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये बात आगे कहते वक्त कि
आपदा का होना एक बात है, पर आपदा के कारण जब हम उसका निवारण करने के प्रयास करते हैं, तो जो उस निवारण के प्रयास में जो लोग शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं वो उसी सामाजिक ढांचे से निकल के आते हैं जो हायरार्किकल है, जिसमें असमानता है, और वहीं पे जाके शायद हमें ये ज़रूरी बन जाता है कि हम इस सामाजिक असमानता को समझने की कोशिश करें। सामाजिक असमानता की एक बहुत बड़ी एक्सिस है जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है भारत में, साउथ एशिया में मुख्यतः, जैसा कि इस किताब से भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। कोशिश हमारी ये थी कि जो साउथ एशिया के 5-6 देश हैं, हम सभी से उनके कोविड रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को जान सके, समझ सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वश हमें सिर्फ 3 देशों के पर्चे मिल पाए, जिसकी वजह से हम शायद बाकी देशों के बारे में नहीं लिख पाए। शायद आगे आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि उन्हें भी किसी तरह से हम लाएं। हिंदुस्तान के बारे में बात करते वक्त शायद हम ये बहुत ही क्लियरली कह सकते हैं कि जो जातिगत असमानता है उसको बहुत ही क्लियरली हम देख सकते हैं। उनका जो मार्केट का क्षेत्र है, जो एजुकेशन का क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इस हद तक कि हम इस असमानता को सामाजिक परिवेश में डालकर समझ सकते हैं कि ये जो जाति आधारित सामाजिक बहिष्कार, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकूं, तो बहुत ही क्लियरली हमें समझ आ जाता है कि जो हमारा ख़रीद फ़रोख्त का जो माहौल होता है वो किन्हीं चीज़ों से जुड़ा होता है। कुछ लोग अपनी चीज़ों को कुछ लोगों के लिए ही ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। सिमिलरली जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें भी हमें दिखाई देता है कि बच्चों के साथ एक अलगाव का बर्ताव बहुत सारे लिटरेचर ने हमें बताया है। मिड डे मील्स के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि बच्चों को अलग बिठाया जाता है। कौन सा हेल्थ केयर प्रोवाइडर किस घर के भीतर जा सकता है, किस घर के भीतर नहीं जा सकता है, ये सब बहुत ही क्लियर है। अब इसके बारे में चर्चा करना बहुत हुआ, इसीलिए शायद इसको बैकड्रॉप में रख के हम लोगों ने ये कोशिश की कि अगर आम वक्त पे, यूजुअल समय पे, अगर नॉर्मल टाइम्स में अगर इस तरह की असमानताएं दिखाई देती हैं, तो जिसे हम हेल्थ इमरजेंसी का नाम दे रहे हैं, जिसे हम कोविड का प्रकोप बना रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उस दौरान इस तबके का क्या हुआ होगा। और शायद वही एक सोच थी जिसको हम क्रिस्टोफर और हमने साथ बैठकर आगे ले जाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं शायद जो कमीशन ऑन सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ 2008 में बना था, इन्हीं डिस्पैरिटीज़ को, इन्हीं असामान्यता को ध्यान में रखते हुए इस बात को बहुत ही क्लियरली कमीशन ने कहा था कि जो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं, जो सामाजिक हमारी समझ, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसके आधार पे अगर कुछ इनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ रिसोर्सेज होता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर बन जाता है हमारी इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटक मेरे ख्याल से बन के निकल के बनता है कि जो हमारी सामाजिक पहचान है, जो हमारी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है, उसके आधार पे अगर हम असमानताओं को एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत ही क्लीशेड ये एडेज है जिससे मैंने शुरू किया था कि मेडिसिन और मेडिकल रेजिम में तो डिस्क्रिमिनेशन की कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिसएग्रीगेट करने की कोशिश करें, जो हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि एक तरफ तो हम शायद स्वास्थ्य संबंधी जो असमानताएं हैं उसकी बात करते हैं, जिसमें ये किया जाता है या ये समझाया जाता है कि शायद भौगोलिक स्थिति को छोड़कर अन्य बाकी जो संदर्भ हैं उसमें हम पॉपुलेशंस को क्लासिफाई कर देते हैं। उनकी जो एक्सेस टू हेल्थ रिसोर्सेज हो सकते हैं या हेल्थ आउटकम्स हो सकते हैं, डिफरेंस है IMR में, डिफरेंस है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, उस तरह से। लेकिन
हेल्थ इनइक्वालिटी सिर्फ इस बात के लिए काफ़ी नहीं होती है, काफ़ी तब होती है या तब हम इस मुद्दे को जब तक के सोशल इनइक्वालिटीज़ इन हेल्थ में लेकर ना समझें, जो विभिन्न जनसंख्या के समूह हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी सामाजिक परिस्थितियों के आधार पे कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसके द्वारा उसका क्लासिफिकेशन होता है, जिसके कारण ये होता है कि आमतौर पे जो सामाजिक वर्ग है वो कहीं ना कहीं उस हायरार्किकल बेसिस पे अपने रिसोर्सेज को, अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम्स को के बेनिफिट्स को उठा पाता है या नहीं उठा पाता है। तो इसलिए दो चीज़ें, और लिटरेचर बहुत ही सफाई से हेल्थ इनइक्वालिटी की तो बात करता है और बहुत बढ़ चढ़ के करता है, लेकिन सोशल इनइक्वालिटीज इन हेल्थ की बात करने पे थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं, और शायद इसीलिए कमीशन ऑन डिटर्मिनेशन, सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे को शायद अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी बैकड्रॉप के तहत अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, कोविड का प्रकोप जब शुरू ही हुआ था, तो जो ग्लोबल मीडिया थी वो तरह तरह की बात हमें बता रही थी कि वायरस कैसा है, कितने वेरिएंट्स हैं वगैरह वगैरह, और किस तरह से वेरिएंट कोविड हैज़ बिकम एन इक्वलाइजर। उसने तो अमीर और गरीब, शहर के लोग, गांव के लोग, सभी को बराबर तौर पे प्रभावित किया है। पर हम शायद इस प्रभाव में इस जो इक्वलाइजिंग वाला जो नैरेटिव तैयार किया गया था कोविड के लिए कि शहर के लोग जो स्लम्स में हैं, जो नॉन स्लम्स हैं, सभी को बराबर से प्रभावित किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं शायद जब हम डिसएग्रीगेट करते हैं तो ये बहुत ही क्लियरली हमारे सामने आ जाता है कि जो दो चीज़ें मेन तौर पे शायद हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है। पहला तो ये कि जो लोग पहले से ही सामाजिक अभाव में जी रहे हैं, जो लोग असमानता के से जूझ रहे हैं, उनके पास रोज़गार के कोई निहित साधन नहीं है, जो पॉवर्टी से ड्रिवन है, जिनके पास घर नहीं है, स्वच्छता रिलेटेड सुविधाएं नहीं हैं, वो बहुत ही ऑब्वियस है कि जब उन पे कोविड का प्रभाव पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा होगा। दूसरा कारण शायद ये हो जाता है कि जब हम हाशिए के लोगों के बारे में बात करते हैं, जो मार्जिनलाइज लोगों की हम बात करते हैं, तो वो तो वैसे ही तमाम सारे जटिल कारणों का सामना कर रहे होते हैं। उन कारणों के भीतर मेरे ख्याल से जो कोमॉर्बिडिटीज़ के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जो महामारी का आना होता है वो उसको और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। इनफैक्ट उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप्स को जो पहले से ही जिन कारणों से वो प्रभावित होते हैं, जिनकी वजह से उनके एक्सेस टू रिसोर्सेज पे असर पड़ रहा होता है, वही शायद कोमॉर्बिडिटी के तौर पे कोविड के प्रभाव को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं। तो ये शायद बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें समझना कि ये बात कितनी वाजिब है कहना कि कोविड वॉज एन इक्वलाइजर, उसने सभी लोगों को समान तरह से प्रभावित किया है। एक छोटा सा उदाहरण कोविड के तहत ही मैं रखना चाहूँगी। कोविड को कंटेन करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली तौर पे जो कहा गया था एज अ पॉलिसी कि स्टे होम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्फोर्स किया गया था, क्योंकि ये मान के चला गया था कि लोग अगर घर में रहेंगे तो जो कॉन्टैक्ट के तहत इन्फेक्शन बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा और कोविड को संभालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये शायद हम भूल गए थे कि जिन्हें घर से बाहर निकलना ही निकलना होता है, वो तबका कहीं ना कहीं
जुड़ा होता है मार्जिनलाइज ग्रुप से। बहुत बड़ा तबका जो काम के लिए, जिसको घर में बैठे रहने की कोई सहूलियत नहीं होती है, दे कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ स्टेइंग एट होम, come from the very low levels of socio-economic realms, जिसमें कि जातिगत असमानता से जुड़े हुए लोग, जो नीचे तबके के, नीचे सोशल एंड कास्ट आइडेंटिटी के में जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत बहुत क्लियरली आते हैं। तो उनसे आप अगर ये उम्मीद करें या उन्हें आप ये समझाएं कि staying home is the best strategy to contain COVID, I think if it falls on deaf ears, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम उस तबके में हैं जहाँ पे रोज़ का खाना लाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही निकलना है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, शायद हम ये भी भूल रहे थे कि अगर हम हिंदुस्तान के जो हाउस होल्ड के आंकड़ों को अगर ध्यान में रख के बात करें, तो लगभग 1/3 परिवारों को एक कमरे में लगभग 3 से 4 लोग रहते हैं। और इस तरह की जो अगर हम हमारे एक परिवार में अगर एक कमरे में 3 से 4 लोग रह रहे हैं, तो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं उस तरह की डिस्टेंस मेंटेन करने की जो सोशल डिस्टेंस के बारे में। सोशल डिस्टेंस इज़ अनदर इशू जिस पे भी मैं शायद 2 शब्द कहना चाहूँगी। फ़िलहाल इसकी बात करते हैं, तो कहना ये चाह रही हूँ मैं कि ये जो स्टे होम और डिस्टेंस की बात की गई थी कि घर के भीतर रह के आप तमाम सारे सुविधाओं का वो कर सकते हैं, आपके घर में राशन पानी भी दिया जाएगा। कैंप्स में काफ़ी हद तक मिला भी था, गया भी था, लेकिन किसको मिला था, कैसे मिला था, वो एक अलग कहानी है और उसका भी शायद हम कहीं ना कहीं किसी वक्त उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन स्टे होम का सबसे बड़ा नुकसान शायद यही हुआ था कि जो सोशो इकोनॉमिकली लोअर रंग्स पे लोग थे, उनको रोज़ की रोज़ जो ज़रूरतें थी उन्हें पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। तो जो ये कोविड से जुड़ी हुई हम जो बात करते हैं कि कैसे महामारी के लिए संस्थागत प्रक्रियाएं जो थी, उनसे ही शायद कहीं ना कहीं असमानताएं आगे आई हैं, सामाजिक असमानताओं को और शायद बढ़ावा मिला है। तो इसलिए शायद ये ज़रूरी हो जाता है कि बावजूद इसके कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कोविड-19 लगभग 2-3 महीने में पूरे सारे विश्वव्यापी स्प्रेड उसका हुआ है। और अपने मेरे ख्याल से 30 जनवरी को WHO ने उसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। और उसी दिन हिंदुस्तान का पहला केस भी आया था केरला में, जो वुहान से पढ़ के मेडिकल स्टूडेंट आई हुई थी। उसी दिन हमारा पहला केस भी आइडेंटिफाई हुआ था। पर जब हम ये जो वल्नरेबिलिटीज़ या हम उन ग्रुप्स की बात करने की कोशिश करते हैं जो दबाए गए ग्रुप हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, पर्टिकुलरली कास्ट बेस्ड जो ग्रुप्स हैं, उसमें से 2-3 जो हम लोगों ने इस किताब के तहत जिनके बारे में हमने बात करने की कोशिश की है, एक तो वो जिन्हें हम प्रवासी श्रमिक के तौर पे जानते हैं, माइग्रेंट लेबरर के तौर पे जानते हैं। दूसरा, और उस एक ग्रुप के तहत भी मेरे ख्याल से अगर उस ग्रुप को डिसएग्रीगेट किया जाए तो बहुत सारे तरह के वर्कर्स उसमें आ जाते हैं, जो इंडस्ट्री बेस्ड हैं। बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, छोटी हो सकती है, इनफॉर्मल सेटअप होम बेस्ड वर्क में जुड़े हो सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्प में के काम में लगे हुए हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा तबका हो जाता है अगर इस तरह के काम वाले हम लोगों को इकट्ठा करें। तो इसमें एक 2-3 पेपर्स है जिसमें इस तबके के लोगों की बात की गई है, लेकिन उसमें कुछ पर्चों में सारे माइग्रेंट लेबर्स को एक तरह से रख के बात की गई है, कुछ में उन्होंने ऑथर्स ने डिसएग्रीगेट करके बात की है, जिनमें से 3 कैटेगरीज बहुत क्लियरली निकल के आती हैं। एक तो ये है जो लोग क्लीनिंग के काम से जुड़े हुए थे, क्लीनिंग के काम में जो हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भी हो सकता है, पब्लिक स्पेसेस में भी हो सकता है, डोमेस्टिक
स्पेसेस में भी हो सकता है। दूसरा था जो क्रिमेशन ग्राउंड पे, बुरियल ग्राउंड्स पे जुड़े हुए कर्मचारी थे, उन्हें किस तरह के काम, उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिली, उन्हें किस तरह के टाइम और जो उनके वेजेस थे उन्हें किस तरह से वो सही वक्त और कम वक्त और पैसा उन्हें किस हिसाब से दिया गया। तो ये एक तीसरा सेट ऑफ पीपल है जिसको कि इस किताब में देखा गया, और बहुत क्लियर तरह से ये निकल के आता है कि बहुत ये सारे के सारे, जहाँ हम पेटी कामों की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज्ड रूप से ही निकल के आते हैं। अगर डिसएडवांटेज ना हो तो शायद लो पेड जॉब्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकली ऐसे चांसेस नहीं थे कि आप अपने प्रोपेंसिटीज़ को इम्प्रूव कर पाते। और आज तक भी शायद उसमें कई सारे अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो जब हम माइग्रेंट वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर एज एन एंटिटी बात करते हैं तो ये बहुत अजीब सी बात हो जाती है कि वो माइग्रेंट वर्कर्स जो बड़े बड़े शहरों को अपना कर्म भूमि बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी शायद डिवोट कर देते हैं इन बिल्डिंग दोज सिटीज़, सारा का सारा इकोनॉमी कहीं ना कहीं उनकी लेबर पे डिपेंड करता है। तो उनके काम को शायद कहीं ना कहीं नकारा गया, ये बिना ध्यान में रखे कि ये इस तरह के वर्कर्स जिनके पास काफ़ी हद तक के वेजेस बहुत कम होती हैं, रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जब 24 मार्च की रात में प्रिसाइजली दो साल पहले, आज 20 तारीख है, ये अनाउंस किया गया कि लॉकडाउन हो गया है, तो उनका क्या हुआ होगा ये बहुत समझने की बात है। उस दिन 24 मार्च को हिंदुस्तान में लगभग 562 एक्टिव केसेस थे कोविड के, और सिर्फ 13 डेथ्स रिकॉर्ड हुई थी, सिर्फ, मतलब बिकॉज देव रिजन टू थाउजेंड्स नाउ, इनफैक्ट लैक्स में पहुंच गई हैं। तो कहने का मतलब ये कि उस वक्त जब एक्टिव केसेस सिर्फ 560 के आसपास थे और डेथ्स 13 थे, complete lockdown perhaps was not a solution. अल्टरनेटिव ज़रूरी थे, शायद हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें लॉकडाउन करने जैसा कोई स्टेप ज़रूरी हो जाता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम कंपेयर करें 1919 वाले स्पेनिश फ्लू, विच इज़ द क्लोजेस्ट टू बी कंपेयर्ड विद कोविड-19, उसमें भी बहुत सारी सिमिलर चीज़ें बताई गई थी, स्टे एट होम, वॉशिंग हैंड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन उसमें भी नहीं हुआ था। स्पोराडिक और किन्हीं स्पेसिफिक रीजन्स में हॉटस्पॉट्स के जगहों पे लॉकडाउन किया गया था। तो इसलिए जब हम पूरा का पूरा देश बंद कर देते हैं तो डेली वेज अर्नर्स को क्या हम अल्टरनेटिव साधन जुटा पाते हैं, जो छोटे रोज़गार करते हैं, रिक्शा पुलिंग करते हैं, यहाँ आके ऑटो रिक्शा चलाते हैं या टैक्सी भी हो सकता है चलाते हों, अलग अलग तरह के कैब प्रोविजनिंग करते हैं जो अलग अलग लेवल्स पे हो सकती हैं, प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। बहुत बार चूँकि हम इनफॉर्मल सेक्टर के लो वेज अर्नर्स की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल्स जो बेहतर पोजीशंस में कार्यरत थे उन्हें भी प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि अगर उन्हें काम से निकाल दिया गया था तो बहुत सारी उनके जो खर्चे थे, जो टू मेंटेन देयर लाइफस्टाइल्स, टू मेंटेन देयर स्टेटस, परहैप्स उसमें भी दिक्कतें आई। तो वहाँ से वो शायद बात ध्यान में रखते हुए जो क्लीनर्स हैं उन पे कोविड के दौरान क्या हुआ, वो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि
हमने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की बात करनी शुरू करी कोविड-19 के दौर में, लेकिन ये वो तबका जो हमारी गंदगी साफ करता है, उसे शायद पीपीई की हमेशा से ज़रूरत रही है। उसके बारे में हमने कभी इतने वॉसिफरस होके बात नहीं की कि हमें इस कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये मुहैया कराना जाना चाहिए। रिसेंट पास्ट में कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स उन्हें दिए गए, पर प्रायः जब हम उनसे बात करते हैं तो ये पता चलता है कि वो इक्विपमेंट्स इतना इल फिटिंग होते हैं कि वो पहन के उनको काम करने में ज़्यादा मुश्किल होती है और दे आर रियली नॉट हेल्पफुल। तो उस दौर में जब आपको ये कहा जा रहा था स्टे होम, फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड्स, तब इन लोगों का क्या हो रहा था? Where was the propensity or the space to stay home and frequently wash your hands when you're expected to be digging into the filth? तो यहाँ पे शायद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज भी जब हम कोविड के तहत पीपीई की बात कर रहे हैं, दिस सेट ऑफ वर्कर्स, इनके बारे में अभी भी हम कुछ बहुत अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, जबकि वे बैक इन 1949 बर्वे कमेटी के रिपोर्ट के तहत हमें ये पता चल गया था कि ये एक तबका है जो इस तरह के काम करता है और इन्हें स्पेसिफिक हेल्थ सेफ्टी की ज़रूरत है, जिसको कि रीइटरेट किया गया था 1960 और 1969 में एनआर मिल्कानी रिपोर्ट के तहत। पर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं टिल अबाउट 1990 मिड 90s में, जब वो कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बना। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह का काम करने वाला श्रमिक जिसका काम इतना अहम है, न केवल पर्सनल हेल्थ और हाइजीन के रिलेशन में, बल्कि एनवायरमेंटल क्वालिटी और क्लीनलीनेस के क्रिएशन में, इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट तो साफ होता ही होता है, उसके साथ साथ जो डिस्पोजल है, जो ट्रीटमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ द वेस्ट दैट वी जनरेट, उस सब के तहत कहीं ना कहीं ये वर्कर अपनी लाइफस्टाइल को दांव पे रख के हमारी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। तो उसके बारे में, उनके बारे में हमारा जो पॉलिसी सेफगार्ड है वो कितना अगर मैं कहूँ ढीला ढाला है। तो ये इसलिए इस बैकड्रॉप में अगर हम कोविड-19 को लाकर देखें तो और भी शायद मुश्किल होने लगती है कि इन सारे डिक्टाट्स के बावजूद स्टे होम, वॉश योर हैंड्स एटसेट्रा, इन लोगों को काम करते रहना ही था, बिकॉज एसेंशियल सर्विसेज एंड वो सारे आपको एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। पर उसके साथ जो सेफ्टी मुहैया करी जानी चाहिए उस पे शायद बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ। देयर आर एविडेंसेस फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग के कंटेंट एनालिसिस किए गए हैं, मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि बावजूद इसके कि WHO ने बहुत ही क्लियरली कह दिया था कि जोखिम भरे कामों से जुड़े हुए श्रमिकों को पूरी तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, हमारे ये वर्कर्स ये जो सामान जो अपना काम कर रहे थे बहुत हद तक के बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के, बल्कि तो ये देखने में आया कि जो उनके पर्सनल कपड़े थे उससे वो अपना मुंह और नाक ढकते थे। महिलाएं प्रायः अपनी साड़ी से और पुरुष जनरली एक गमछा जैसा कुछ कपड़ा होता था जिससे वो अपना मुंह ढकते थे और उसके बाद वो काम करते रहे। एक पिटिशन फाइल किया गया था म्यूनिसिपल सफाई कामगार की तरफ से दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी 8 मई 2020 में, जिसने बहुत ही क्लियरली ये बात दोहराई कि ये कर्मचारी बेहद एक्सपोज्ड हो रहे हैं इस तरह के हज़ार्डस मटेरियल से। ना केवल जैसे आप हॉस्पिस में फॉर एग्जांपल देखें, पीपीई वगैरह सारे सेफ्टी गियर्स के साथ एक जो हायरार्की है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, डॉक्टर्स, नर्सेज, उसके बाद जो सबऑर्डिनेट स्टाफ हो सकता है। सबऑर्डिनेट स्टाफ में जो सबसे नीचे है, जो सफाई कर रहा है,
ह्यूमन एक्सक्रीटा की, बॉडी फ्लूइड्स की, बेड पैंट्स की, उसके पास कितनी वॉइस होती थी उन सारे इक्विपमेंट्स को अपने लिए मानने के। शुरू में तो इक्विपमेंट्स ही काफ़ी नहीं थे, तो इक्विपमेंट्स भी शुरू जो हायर हायरार्की के वर्कर्स होते थे उन तक ही रह जाते थे। नीचे के लेवल्स पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, स्पेशली हॉस्पिस में क्लीनर्स को, वहाँ तक के ये सपोर्ट सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स मिल भी नहीं पा रहे थे, और वो उसी बिना इक्विपमेंट्स के काम करते रहे। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पिटिशन फाइल किया गया था। नतीजे में सिर्फ ये कहा गया कि जैसा आमतौर पे होता है कि उन्हें हमने प्रोवाइड किया है, स्टेट ने प्रोवाइड किया है सेफ्टी इक्विपमेंट्स। कई सारे हॉस्पिटल्स के रिस्पॉन्सेस को कोलेट करके ये पता चलता है कि उन्हें प्रोवाइड किया गया था, लेकिन बात वहीं पे आ गई थी कि वो इतने इल फिटिंग वेपन्स थे कि वो उन्हें यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो फ़िलहाल अभी तक के कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके तहत हमें ये पता चल सके कि कितने इक्विपमेंट्स को इन वर्कर्स के लिए यूज़ किया गया था, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कितने वर्कर्स थे जो इस तरह के काम से जुड़े रहे कोविड के दौरान, और कितने थे जो जिनके पास जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी इस तरह के इन्फेक्शंस हुए और डेथ्स भी हुई। दो संस्थाएं हैं, सफाई कर्मचारी अभियान और जन साहस, जिन्होंने कुछ क्राउडसोर्स डेटा कलेक्ट किया है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। सेंसस हमारी 2011 की सिर्फ हमें ये बताती है कि किस तरह की टॉयलेट्स हैं, और उसके बेसिस पे हम ये आंकते हैं, जो सरकारी फिगर है सेंसस का, कि करीब बहुत जो नंबर्स एस्टिमेट किए गए हैं, अबाउट 7 लाख बताया जाता है। लेकिन जब आप डालबर्ग एडवाइजर्स या सफाई कर्मचारी अभियान जैसी संस्थाओं के आंकड़ों को देखें तो ये नंबर करीब रेंज करता है 5 to 7 मिलियन से। तो मेरे ख्याल से सुविधाएं देना तो ज़रूरी है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके आंकड़ों को भी संकलित करना, आंकड़ों के जब तक आंकड़े संकलित नहीं होंगे, हम कोई भी प्रभावशाली पॉलिसी के बारे में ना तो सोच सकते हैं, ना उसके बारे में उसको बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो ये शायद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है उन लोगों के बारे में, उस लेवल के वर्कर के बारे में। बहुत सारी बातें हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स की थी, लेकिन नॉट दैट फ्रंटलाइन वर्कर्स हु वर एट द हायर रेल्स, द डॉक्टर्स, नर्सेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि उनकी अहमियत नहीं है। इनफैक्ट कोई भी स्वास्थ्य संबंधी अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनकी अहम भूमिका है, लेकिन उस अहम भूमिका को निभाने में उनका सहयोग करने वाले कर्मचारी भी बहुत अहम होते हैं, जिनको कि हम शायद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। उन्हें भी हमें उसी तरह से अटपार लाके उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी सुविधाओं के बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा सेट ऑफ वर्कर्स जिनके बारे में शायद इस किताब में कहा गया है, वो है क्रिमेशन ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे थे। क्रिमेशन ग्राउंड पे भी और बुरियल ग्राउंड्स में, स्पेशली सेकेंड वेव के दौरान जब हमने बहुत ही ज़्यादा सर्च देखा डेथ्स में, कोविड रिलेटेड डेथ्स में बहुत बड़ा सर्च आया। इसमें दो चीज़ें शायद बहुत अहम हो जाती हैं। एक तो ये कि जो लोग डेड बॉडी हैंडलर्स, जिनको हम अंग्रेज़ी के फ्रेज से एक्सप्लेन करते हैं, वो एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप से आते हैं जिन्हें डोम कहा जाता है, एंड दे आर सपोज टू बी द वन हु वुड बी डीलिंग विथ हैंडलिंग द डेड बॉडीज। और उस हैंडलिंग में एक अजीब तरह की हायरार्की है। एक तो वो तबका है जो लिटरली डेड बॉडी को उठाएगा, ले जाएगा, पायर पे रखेगा, लिट करेगा, या फिर कब्र को खोदेगा और उसमें लोअरिंग द थिंग विथ ऑल द रिचुअल्स वगैरह जो भी होते होंगे। दूसरा एक तबका है जो इस तरह के वर्कर्स को कॉन्ग्रीगेट करता है, जिसे बोले का कॉन्ट्रैक्टर, जिसको कि लोकल टर्म्स में मालिक कहा जाता है, मालिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और कोविड के दौरान जो मेरे ख्याल से जो चीज़ें बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट होती हैं कि किस तरह से
आपदा को अपॉर्चुनिटी बनाया जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, प्लीज़ रिमेंबर दैट कोविड के दौरान स्कूल्स बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो बहुत सारे बच्चे जो इस कम्युनिटी के थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, उन्हें भी चूंकि नंबर ऑफ डेड बॉडीज वाज सो मेनी कि जो उनके एल्डर्स, फैमिली के जो एल्डर्स थे वो जिन उन कामों में तो जुड़े ही हुए थे, चूंकि नंबर्स इस कदर ज़्यादा हो गए थे तो कि उन बच्चों को भी ये सो कॉल्ड मालिक्स ने निकाल के उस काम में वापस लगाया, क्योंकि ये था कि उन्हें मैन पावर की ज़रूरत थी और शायद परिवारों को किसी न किसी फॉर्म में रेम्यूनरेशंस की ज़रूरत थी। वो इसलिए भी हुआ कि नॉर्मल टाइम्स में जब डेथ होती है तो डेड बॉडीज पे कपड़े होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ये डेड बॉडी हैंडलर्स के हिस्से में आ जाती हैं आफ्टर और बिफोर द बॉडी इज क्रिमेटेड। उनके जो दे स्कैवेंज द एशेस, या अगर पानी में डाला गया है तो नदी में डुबकी लगा के वो चीज़ें निकाल लेते हैं। इस दौर में क्या हुआ कि डेड बॉडीज वर ऑलमोस्ट abandoned, a number of dead bodies were abandoned, I'm sure we all know about that. तो उससे उनकी वो जो आई थी अनऑफिशियल, उनकी जो इनकम थी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नॉर्मली शायद ये पूरे क्रिमेशन की प्रक्रिया में जो खर्चा आता था 5 से 6-7 हज़ार तक आता था, लेकिन कोविड के दौरान ये करीब 4 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया। मालिकों को तो ये पैसा मिला, लेकिन जो वर्कर्स थे, स्पेशली द यंग वर्कर्स जिनको आपने ज़बरदस्ती बुला लिया था बिकॉज दे वर सिटिंग एट होम, क्योंकि उनका स्कूल ऑनलाइन क्लासेस उनके हो रहे थे, तो एक तरफ से तो उनकी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ा, दूसरा आपने फिर से उन्हें उस ह्यूमिलिएशन में वापस ला दिया जिससे वो और उनका परिवार उनको हटाना चाह रहा था। तो ये एक बहुत क्लियरली निकल के आती हैं ये चीज़ें जो क्रिमेशन ग्राउंड में वर्कर्स थे। बाकी जो हम अगर माइग्रेंट, और ये दोनों ही तबके काफ़ी हद तक के दे माइग्रेंट्स टू मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वेयर दे आर वर्किंग, तो माइग्रेंट वर्कर की ब्रॉडर कैटेगरी में ये वैसे ही शामिल हो जाते हैं, रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इनके जो मुद्दे थे उन्हें लाना मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि मैं उनके मुद्दों को लेके आऊँ। माइग्रेंट वर्कर्स एन मास जिस तरह से उनका शहरों से एग्जोडस हुआ, मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो रूरल वर्ड डिस्ट्रेस माइग्रेशन जिसे हम कह सकते हैं हुआ, और हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि जो वापस गांव गए थे, अपने ओरिजिनल घरों में गए थे, क्या उन्होंने वापस आने की कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों ने या काफ़ी हद तक के लोगों ने वापस आने की कोशिश की, और उसमें जो प्रॉब्लम्स उन्हें आए हैं, जहाँ पे वो पहले काम करते थे वहाँ उन्हें काम करने को नहीं मिला, या अगर मिला तो उतने पैसे नहीं मिले। महिलाएं जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम कर रही थी उन्हें वापस नहीं रखा गया, या वापस रखा गया तो उनको अलग तरह से रखा गया। आप पहले शायद वो खाना भी बना सकती थी, अब वो खाना नहीं बना सकती, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो बताई, जो हमें पता चलती हैं। इसलिए शायद ये कहकर मैं समाप्त करना चाहूँगी कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करी, मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर, मैं और एक आध और हमारे कोलीग्स, हमने बैठ के इस मुद्दे पे काफ़ी हद तक के, शायद अगर मैं कहूँ कि सोचा और फिर कहीं जाके ज़ीरो इन किया कि नहीं, इन मुद्दों को हमें लाके रखना चाहिए। साउथ एशिया में कास्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, और शायद इसीलिए हमने सोचा भी कि अगर बाकी के देश भी हमें बता सकें कि वहाँ पे क्या स्थिति है, तो मेरे ख्याल से एक कलेक्टिव सा बनेगा, और काफ़ी हद तक कि हम शायद इस बात को लेके आ सके हैं। कास्ट बेस तो है ही जो मुद्दा बना, पर और भी एक्सिस ऑफ इनइक्वालिटी जैसे डिसेबिलिटी हो गई, या फिर जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है कोविड से जुड़ा हुआ, स्टेइंग एट होम हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट कट्स अक्रॉस मेनी अदर इश्यूज। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें
इस किताब ने आगे लाने की कोशिश की है। हमारी इस वक्त कोशिश यही है कि इनमें से जो कुछ मुद्दे थे जो हमें लगे कि इम्पोर्टेंट हैं, हमें इस प्लेटफॉर्म से शेयर करने चाहिए। हमने ये कोशिश की है और ये कह के मैं समाप्त करती हूँ। विद्या जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। महामारी में संस्थागत असमताओं पर आपने विचार रखे। इस हालात में गवर्नमेंट की जो भी एक्शन रही वो किस तरह से जानलेवा थी, इस तरफ आप हमें ले गए। इस बात से तो हमें यह पता चली कि महामारी भी एक डिस्क्रिमिनेशन का चेहरा लेके बढ़ रही है, बढ़ती है। ये बात आपने इस बात को पुष्टि दी है। थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऑनरेबल स्टीफन क्रिस्टोफर सर को, लेकिन उससे पहले मैं सर का परिचय देने के लिए इनवाइट करती हूँ मिस समर अजीज, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। समर, समर लाएगा, समर अजीज। शायद गायब हो गया। Hello? हाँ समर, ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. Yes, yes. Yeah. Today we have a special guest, which is Stephen Christopher. Stephen Christopher is currently a Marie Curie postdoctoral fellow at the University of Copenhagen. Stephen Christopher is he's engaged in two interrelated projects. One on casteism within Himalayan tribes, and another one is the rise of Tibetan Buddhism in East and Southeast Asia. In 2019, he was GSBS postdoctoral fellow at the Kyoto University. Stephen has taught anthropology, South Asian studies, and academic writing at the Bijan National University, Vietnam National University, University of Bremen, based in the Himalayas, and Syracuse University, semester at sea, and currently at Tokyo Metropolitan University and Dinki Tusotian University. Hello? Okay, great. Thank Hi, you, Samar. Samarji. Hi. Thank you. Okay, thank you. I just want to Yeah, make sure welcome. everyone can hear me okay? The volume is okay? Yes, sir. Audible Okay, now. Yeah. great, okay. तो जैसे संगमित्र जी बोल रही थी तो मैं हिंदी बोल लेता हूँ, लेकिन काफ़ी सालों से मैं दूसरे देशों में रहने की वजह से मेरी हिंदी बिल्कुल बिगड़ गई है। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो जापानी भाषा से अनुवाद करना पड़ता है। तो इसलिए इस भाषण के लिए मैं अंग्रेज़ी में बात करना चाहता हूँ। अगर कोई सवाल हो तो अंग्रेज़ी से बात कीजिए। What I want to do today is I want to contextualize some of Sangamitraji's comments, and I want to go a little broad and talk about some of the big theoretical themes. And I also want to go very small because I'm an anthropologist, and I want to talk about some of the case studies that are in the book. And I'll include my own case study. I work with the Gadi tribe in Himachal Pradesh for the last 12 years. So I'm going to go big and then go very small. So on the big side, there are only 2 points I want to make. I think everyone knows Paul Farmer. He recently died, in the past month. Paul Farmer was part of a revolution in how we think about social inequality and healthcare. And there's been a push in anthropology to understand how racial and socioeconomic inequalities are at the root of health inequalities.
And so health disparities between groups of people are not because of genetic differences between races, but are because of the socio-political conditions, the daily life of people, which have certain health outcomes. So if you're interested in this subject, there's a scholar named Clarence Gravely, and in 2009, he wrote an article called How Race Becomes Biology. And this article changed the way that I think about health and caste-based discrimination in particular. Gravely is talking about the United States, and he's asking a simple question. Why do minority groups have worse health in America, specifically African Americans? And traditionally, the answer is that there are genetic differences that create different health outcomes. But Gravely, not the first person, but a very articulate perspective, he argues that, in fact, what's going on is that racism in America is producing racialized differences in health outcomes. So he analyzes cardiovascular disease, diabetes, some cancers, and especially diseases related to low birth weights. Because when children are born prematurely, it's often due to stress. Those stresses have social origins. And Gravely's point is that when you study anthropology in America, one of the first classes you learn that there's no such thing as race. Race is a social construct. However, Gravely's point is that although race is a social construct, the consequences of racism produce racialized differences in healthcare outcomes. So his argument is that racism becomes biologized. It becomes part of biology. And this is the basis for this book. This is running through the theme of this book, is the basic argument articulated by Gravely, Paul Farmer, and many others that socioeconomic differences, forms of caste-based discrimination, gender-based discrimination, regional-based discriminations have health outcomes. And some of them are biological, and then some of them are more, as Sangamitra was saying, some of them are more psychological, relating to stress, anxiety, social precarity, we say in English. It means living in the social margins produces a tremendous amount of stress. And I work in Japan, and there's been an explosion of social precarity in the workplace. Traditionally in Japan, people worked in companies for their entire lives. That system has broken down, and especially for women who have to both be household, they have to work in the house, they have to be mothers, they have to be wives, and they have to work in the office. They have a tremendous amount of stress and pressure. It manifests as physical disease. So there's alopecia, there's stress-induced baldness, stress-induced skin disease, stress-induced stomach ulcers. There's a whole variety of, multiple chemical sensitivity is connected to stress. So scholars now are arguing that women in Japan experience these health problems because of the social anxiety of being a woman in Tokyo, where they need to be both a mother and an office worker. Okay, so that's on the first front. I really encourage everyone to look at this 2009 article. It's in the American Journal of Biological Anthropology, and it's called How Race Becomes Biology. And I know the discussion is different in India because this discussion about race and racism has an American focus. But this is a global phenomena. And so that's the first half. That theme runs through this book. The second point I want to make that's very broad is that my role in this book was not to talk about COVID in particular,
because I was not in India during the COVID period. I was in Japan. So Sangamitra has spoken very articulately about COVID issue, and what I want to focus in on is caste, because a third of this book is about scheduled castes and scheduled tribes. And I want to make two simple points, and these points also are themes that run throughout this book. The first point is that in the study of caste, we can make a very rough division between two different approaches. One approach is the post-colonial, anti-essentializing anthropology of the late 1990s and early 2000s. People like Nicholas Dirks, who put a very heavy focus on deconstructing caste and saying that the colonial government invented caste, or institutions need to be deconstructed so that we can understand the production of caste through institutions. That was a very important move in anthropology. It gave us many insights into the nature of caste. However, there's another approach. Instead of studying the castes of mind, this book, my approach as well, and a trend that's developed in the last 5 years has been to study the mind of caste. And what that means is, what are the inner experiences of casteism? And this is nothing new, because Dr. Ambedkar was very focused on analyzing the subjectivity of casteism, how people's inner experiences, their subjectivity, their identity are damaged by casteism. Okay, so there's nothing new about this, but anthropologists, especially in America and especially in the West, especially non-Indians, there's been a turn away from analyzing caste, because there's a sense that, oh, maybe as a white guy, I'm exaggerating caste, or maybe I'm orientalizing India by focusing on caste. Maybe I'm playing into colonial tropes or attitudes that exaggerate caste. And people that happens. So there's a caution that we should not exaggerate caste or casteism. And caste is very dynamic and has gone through periods of rapid change. And so we need to understand the flexibility of caste and when to apply it as a theoretical framework and when not to apply it. But the point that I want to make, and the point of this book as it regards to caste, is that we need to think more carefully about the affects of casteism. Okay, what are the psychosocial damage of the fears, the anxieties, the humiliations of casteism? How is it expressed culturally, and how is it expressed subjectively? Okay, this is not the caste of mind. This is the mind of caste. And so that's just a broad point that I want to flag, that many of these chapters interrogate and look at how health outcomes and how well-being in a very broad sense of mental well-being, emotional well-being, a feeling of being socially accepted, of being recognized by the government for who you are, recognized by your community about how you want to identify. This is the domain of affect. And it's here in this domain that my research is focused for the past 10 years. And so with those two theoretical comments, I want to just describe some of the case studies of this book. I won't take too much time because I want to leave time for questions. With regards to caste and tribe, there are several chapters in this book that are specifically focused on political misrecognition. Okay, so there's an American scholar, a philosopher, Charles Taylor. He wrote 20 years ago about the importance of being recognized. Cultural recognition is an important source of well-being. And when the community doesn't recognize you as you are, and when the government doesn't recognize you for who you are as a community, this has negative social health outcomes. Okay,
So in America, there's a debate going on about LGBT issues, and there's something called dead naming. What that means is that if a person transitions from being a man to a woman or a woman to a man, they will change their name to reflect their new gender identity, the gender identity that they feel that they've always had. Dead naming is when the community or people use their previous name of their previous gender to insult them or to not recognize their gender transition. Okay, this is called dead naming. This causes tremendous psychological harm to LGBT people when people refuse to recognize their transition and use their previous name as an insulting and derogatory way to trap them in an identity that they don't associate with. Okay, this has real empirical health outcomes connected to depression and suicide. And so this is in the realm of LGBT issues, but in this book, what we're looking at is several case studies where communities are not getting the federal recognition that they think they deserve. And so I work with the Gadi tribe, and I'll talk about the Gadis a little bit later, but there are two other chapters that directly engage with this. One chapter by Nimisha Thakur is about the missing tribe. And the missing have an autonomous council in Assam. We're talking about in Assam. They have an autonomous council, but that autonomous council does not have constitutional status. And the missing are petitioning the government for constitutional status. And Nimisha's article, her chapter, very beautifully goes into the details of how outside health experts come into the missing community and blame the missing culture for various health outcomes. And the reason is because of pig consumption. So missing have an entire worldview and life way built up around pig rearing and pig consumption. And there are Brahmanical state discourses that stigmatize pig consumption, that make it considered dirty, that it transmits disease. Even if the evidence, the empirical evidence is not clear, there are discourses that are essentially nationalist, right-wing, Hindutva, and Brahmanical that oppress the missing people and try to strip them of their collective practices, their spirituality, their migration histories, their ties to their ancestors and to their land. And Nimisha's article does a wonderful job of showing the harm, the psychological, mental harm of being a community like the missing based on pig rearing when there's so many outside pressures condemning you, that you're being backwards or you're doing these, you're following either in superstition or you're following in backwards tribal culture. And so this is one example of the missing are appealing to the state for constitutional recognition so that they can align their cultural practices with the state in order to be recognized as a pig rearing community, which will have health outcomes. Okay, it will benefit them. It will benefit their collective health to not have outside high caste nationalist discourses stigmatizing them. Okay, another example of this is from Jay Prakash Sharma. He wrote a chapter about the Ho tribal community in Jharkhand, and his chapter is wonderful. I encourage everyone to check it out. What he argues is that from the colonial period to the post-independent state, the Ho tribal community has been deeply oppressed by outside forces. And there have been resource extractions from Jharkhand affecting the Ho community. And so what Jay tracks is that when COVID started, the Ho tribal community largely disregarded or disbelieved
the health recommendations to do social distancing, to wear masks, to stay inside. And Jay tracks how ethnographically, how the Ho tribal community draws from hundreds of years of oppression, resource extraction from the British to the Indian states, and also these kind of anti-worker state legislation, anti-worker and anti-union mining companies. He's drawing from that long history to argue that when the Ho disregard social practices related to COVID recommended practices, it's because of a history of exploitation by the state. And he goes into these great details about rumors that pass among the Ho, about misinformation spreading on social media, about gossip, about various kinds of home remedy cures like drinking gomutra, and all kinds of conspiracy theories. And the point that he's making is that on the one hand, we can say this is bad. Okay, the Ho should be following certain health recommendations to prevent the spread of COVID. On the other hand, these kinds of strategies are the weapons of the weak. They're the weapons of a community that have been exploited for hundreds of years. They're the weapons of indigenous resistance. And so we need to be careful about condemning misinformation or rumors or wrong factual information about COVID when it's coming out of this kind of ethnographic context. Okay. And so these are two examples of tribal communities who are dealing with the states. My work has been with the Gaddi tribe in Himachal Pradesh, and I won't go into many details about it, but I'll just briefly mention that among the Gaddis, if anyone, I'm sure many people know the Gaddis because they're quite a famous ethnographic pastoralist community in India. When you have an image of the Gaddis, you're actually thinking of Gaddi Rajputs. And 80% of the community are Rajput. But 20% are Dalits. And those 20% of Dalits are in the SC quota in the region of Kangra. Not in Chamba, but in Kangra. And I've been working with these SC Gaddis for the past 10 years about how they mobilize to get scheduled tribe status. And I look at the mental anguish, the harm of misrecognition, that Gaddi Rajputs don't accept them in some cases, and the Indian state, the Himachal state government has not scheduled them as a tribal community, but put them in the scheduled caste community. The problem with that, there's two problems. One, there's more stigma around being SC. And number two, the SC quota is 4 times more competitive than the ST quota in the state of Himachal Pradesh. So the people who most need reservation benefits are least likely to get it. Okay, and everyone knows this story. This is the problem of creamy layer and reservation benefits going to the people who sometimes least need it in a marginalized community. The twist that I want to focus on is that I work on the mental harm, the psychological harm of misrecognition. And that's why I joined this book project. I'm not a community health expert and I'm not a COVID expert, not by any means. But what I focus on is how communities respond to misrecognition and how they face mental, emotional, psychological anguish and harm when the state doesn't recognize their identity. And so in the case of Gaddis, I've talked about everything from witchcraft possession to different forms of conversion. Gaddi Dalits have converted to Radha Swami. They've converted to the Arya Samaj. They've converted to Protestantism. They face high levels of witchcraft torment in villages. All of those things are connected to the social precarity of not being recognized as Gaddi. That they live in a Gaddi community, they speak Gaddi language, they have Gaddi culture, they are integrated into Gaddi life, but they're not accepted as Gaddi.
not by many Gadis and not by the state. Okay, so returning to Gravely's argument, these kinds of marginalizations produce differential health outcomes. And I'm not a doctor, and I'm not doing empirical research on those health problems, but through ethnography, I track the kinds of anguish that can last for decades in families. And so just one brief example is that many Gadi Dalits converted to the Arya Samaj before the first constitutional scheduling of scheduled caste and scheduled tribe. Their ancestors wanted to hide their Dalit status and to get uplift through the Arya Samaj. So for a time, they wore Janeu, they learned the Gayatri Mantra, and they became Arya Samaj. The problem is that when the post-independent government decided on which communities will be scheduled as tribal or Dalits, they did not include Arya, because Arya means Shresht, it means the highest caste, right? The highest type of person is an Arya. And so these Dalits who adopted the name Arya, they changed their caste name in the revenue record, which means they changed their legal documents to Arya. They, for the last 50 years, have not gotten reservation benefits. And in this chapter that I submitted for this book, I track over 10 years how families have faced round after round of humiliation, frustration, wasted money, dealing with bribes and advocates and lawyers. And these are Dalits who live in mountain villages. They're often non-literate and they're often unable to negotiate the very complex red tapeism of India, the bureaucracy and administration. So this chapter that I submitted focuses on the psychological and mental harm through interviews and through long-term relationships with people I've had for 10 years now. I describe how being an Arya when you're actually a Dalit, what does that do to your health? What does that do to your psychology? That you're trying to prove to the state that you're a Dalit. Okay, so your ancestors wanted to hide. They wanted to erase your Dalit identity. Now you have to prove your Dalit identity. And that in itself can be a humiliation, but it's actually very hard to do. And it takes years and years, and it takes thousands of rupees. It takes trip after trip to the revenue record office and to various administrative buildings in different regions. You have to go to Chamba, you have to go to Kangra, you have to go to Dharamshala. So imagine there are thousands of people stuck in this position. They're villagers, they're scratch farmers, they do what's called flock duty. They have sheep and goats in a very limited region. Imagine the harm that this produces for these thousands of people. All they want is to be recognized as Dalits, to receive SC benefits. And the state has created a red tape nightmare for them. So I look at that with regard to this one caste, but for the last 10 years, I've been looking at Gadi Dalits. There are 5 Dalit groups, and all of them are in different positions, and they're all receiving different kinds of harm. One caste group has higher rates of witchcraft possession. One caste group has higher rates of conversion to Christianity, which alienate them from Gadi tribes because the Gadis dislike Christianity. They say being a Christian is opposed to being tribal. So there's a conversion into groups like Radha Swami or Sikhism. And so I study the psychological and mental effects of this. And that's one of the themes of this book that runs through this book, is that we should be looking at institutions, and many chapters do look at institutions. So we have chapters where people go into hospitals, they look at the culture of negligence in hospitals, and they argue that there are caste practices in government hospitals, that there are unscientific attitudes about disease transmissibility, about infection and the likelihood of infection. And those are caste practices, especially with regards to cleaning hospitals. Okay, so we have chapters where people are criticizing institutions
criticizing the corporate health sector for not having regulatory oversight, criticizing profit-driven models of hoarding resources and price gouging during the COVID outbreak. There's a great chapter on the digital divide and how there's an urban-rural divide that is correlated with suicide. So students who are unable to study online have higher rates of mental anguish. It contributes to suicide rates. So we have many chapters are focused on institutions, as they should be. And somebody like, we have also a great chapter by Zia who wrote about the mohalla, the Muslim neighborhoods and the red zoning of Muslims, and how the mental anguish of not living in a recognized neighborhood. And when I lived in Jaipur almost 20 years ago, I also lived in a basti that was an illegal basti. And for 6 months, I experienced what it was like to have police raids, to have the government not recognize the community I was living with because it was a roadside basti. And so Zia looks at that with regards to Muslims living in red zones. So we have elements that are about institutions, that are about the organization of city and urban planning, infrastructural planning. Okay, we have very broad chapters. But at the heart of this is moving from that level of the large-scale analysis of institutions, moving down into the mind of caste and the caste of mind. Okay, what is it like psychologically, subjectively? What are the humiliations of casteism? And again, Dr. Ambedkar was always talking about this kind of thing. So there's nothing new about this. It's just in the West, because now I'm in Denmark. Just yesterday, I was in a meeting with a PhD student who's working on trash disposal among Newars in Kathmandu. We talked for 2.5 hours about trash disposal, and she didn't talk about caste. And I looked at her writing, and she said, "Oh, Western people often exaggerate casteism, or there's an exoticizing tendency towards recognizing caste among Western people." And so it's not that she's afraid to talk about caste, it's that it's discouraged as an analytic framework to talk about casteism because of a Western guilt, of colonial guilt, which is a justifiable guilt, but also a concern, a shift towards institutional deconstruction and away from the subjectivity, the experience of casteism. And so just in closing, I want to mention that if you're interested in this side of it, there's a growing field that I'm part of, which is the Anthropology of Reservation. And there are several scholars who are looking at the psychological harm of reservation with regards to recognition and misrecognition. And in India, there are 2,000 communities who are petitioning the Indian government to be recognized as tribal. And within tribes, we don't know how many, there are thousands and thousands of castes and groups who feel like they belong in the ST quota, who are parts of tribes, but are pushed away because they're Dalits. And so that's what I've been advocating for, is that we need to understand tribal Dalits. And that term tribal Dalits sounds weird to some people because the idea of tribes having Dalits automatically sounds weird. And that's for very complex reasons relating to the colonial state and how they constructed ideas of the tribe and made it in opposition to caste. And Indian sociologists have a long tradition of this tribe to caste continuum, which often obscures the integration of partial integration of Dalits within tribes. And so in this book, I brought in several people to talk about that, and my own work is about that. And I just want to conclude there that we should be thinking about these intersectional identities when we think about health. So it's not just SC, ST, OBC. I hear a lot of people just say them like they're the same thing. But actually, in the intersection of SC and ST is a third identity,
which are scheduled tribe Dalits. And so we should be thinking more about these kind of intersectional identities when we think about health. All right, so I've talked too long. I would love to hear some questions for Sangamitraji and me. So let me stop talking, and if anyone has questions, I'd be happy to address them. Thank you. या थैंक यू सर। आपने कोविड के दौरान मार्जिनलाइज ग्रुप के साथ जाति अंतर्गत भेदभाव और उसके सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक परिणामों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके सवाल जवाब के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपका अगर कोई सवाल है तो आपसे नम्र निवेदन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में आपका सवाल डाल सकते हैं। हेलो थोरात सर। हाँ, नहीं, अब मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दोनों का हुआ है, संगमित्रा और I must pronounce his name, Stephen Christopher. Yeah, just thank Stephen. you. Thank you, Stephen is Stephen. fine. Yeah, thank you very much. Thank you very much. So I think it has been an extremely new thing. They have provided evidence on India as well as Sri Lanka and Bangladesh. Earlier, we were talking based on very ordinary surveys and sort of general observation, but now it has come out very well through the systematic research, how Dalit face discrimination in accessing health services and the health worker themselves face discrimination. So I think I would not like to add many more. Let us take the answer question. Are there some question on the chat? Vidya? Vidya, you are mute. सर प्रश्न नाही आहे सध्या। चॅट मध्ये नाही आहे? हा, एक अलका पाटील मॅडमच्या प्रतिक्रिया आहेत फक्त, कमेंट्स केली आहे। थँक यू स्टीफन सर, आय एम ऑल्सो रिसर्चर ऑफ आदिवासी वुमेन, इट्स व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह फॉर मी। ओके, एंड आई थिंक या सुजय कांति घोषाल पूछ रहे हैं सर, it is established fact that lower caste people are marginalized, working in lower post, low accessibility of health facilities. My query is that there have any relationship among poverty, health facilities and lower caste groups during COVID-19 to Sangamitra ma'am. Thank you. Shuruat Darapuri also raised her hand later on. Okay, sir. Okay. Next. Vidya, should I respond to Shujoy's question? Yes, ma'am. Yes. Go ahead. Thank you, Vidya. Shujoy, I completely agree with you when you say that when we are referring to the marginalized groups, the conditions in terms of the occupational levels, poverty, etc., is fairly low, and that's precisely why they are marginalized, right? And when you say that what happens to them in terms of access to care during COVID, the persisting levels at which they are in terms of the unequal access, in fact, became more vibrant in terms of any kind of access which could have been made available to them or they could have access. For example, like I said while I was speaking also, when in normal times, when there are issues in terms of access vis-a-vis care provisioning, there are studies which have very clearly said that despite the claims which medical fraternity makes, that disease does not discriminate, death and disease does not discriminate, there are evidences of discrimination becoming very clearly visible, because those of us who are dispensing services come from certain kinds of hierarchies. So the study which I have been a part of, if I reflect from there, fairly old in that sense, more than 10 years now, is very clearly bringing out the nuance that
when you are in conversation with a doctor regarding your query, however much as a medical care provider I may claim that I do not know your social identity, and therefore there is no way that you can accuse me of being discriminatory. The moment I tell my name, the moment I open my mouth, you are able to figure out which social ladder I come from. And similarly, when you are relating these in terms of COVID-19, first of all, the very process of disseminating the information regarding COVID, particularly in the ladder of the socio-economic realms that you would want to put the marginalized groups. In fact, if you're familiar with NFH's data, you would know that if we disaggregate the populations by way of wealth quintile across those who are marginalized versus those who are privileged, we see a much larger share of poor people who are in the marginalized groups as compared to those who are amongst the privileged populations groups. So going by that very generic information, there are evidences that people who had to go for care during COVID, particularly non-COVID related morbidities, were completely kept aside, and a lot of people who needed institutional care for non-COVID morbidities were turned away. So when you say that, is there any relationship among poverty and health facility, etc., among the lower caste group during COVID? I said very categorically, the data that is available to us in terms of any disaggregation, state isn't, except for some states, Maharashtra being one of them, we do not have data on, even on across the social groups. The closest we get is in terms of gender, that we have the data on COVID. So one of my arguments, therefore, was that other than the crowdsourced data, the micro studies which have managed to collate data together, we do not have data on these disaggregated informations, which will be very important for any kind of policy making. So that's what you will probably need to take on board when we are trying to make these connections. The relationships which we are drawing upon in terms of COVID and marginalized groups is largely based on the micro level studies, the crowdsourced data that we have at the moment. State-driven data does not give us information, any empirical evidence. You're familiar with the way that even the quantum of migrant laborers, the state said we do not have data on them. It was only based on crowdsourced data, micro-level studies, that we could collate them together to map how many of them were there. Right. So that's my point to you, Shujai. Thank you, ma'am. Yes. Next question from Shura Dharapuri. Sir, आप unmute करिए. Ask your question, sir. And this question is for Dr. Stephen. And he talked about the Gadi tribes. There was some connectivity issue. I couldn't hear some of the points, but I just wanted to, it's a question also, and there's an observation also. I wanted to know whether he worked, did he find any Ambedkarite movement in the area that he worked? And what I feel is that despite discrimination, I heard about, the tribes converting to various religions, but I never heard of, they're going for, the Buddhism propagated by Dr. Ambedkar. So, despite discrimination, what is the reason that they don't get attracted to the Buddhism that was interpreted by Dr. Ambedkar? Thank you. Yeah, that's a really great question. Thank you. I can't generalize because there are thousands of groups petitioning to join the ST quota. What I would like to do in the future is do a large scale project that looks at those 2,000 groups and looks in the fringes where there are SC communities who are petitioning to join STs,
and try to understand their spirituality in particular, because I really am an anthropologist of religion. That's what I do. So your question is, why don't they convert to Buddhism? And in the case of Gaddis, they never even consider it. Okay, there is no Ambedkarite Buddhist movement because there are indigenous and local religious traditions that are more attractive. So the Arya Samaj moved up into Himachal in the 1920s and 1930s. So there was a large push towards the Arya Samaj. The proximity of Gaddis to Punjab means that the Radha-Swami community has moved into the region. So you'll find a lot of Radha-Swamis and Satsangis. There are also indigenous Christian movements. There's Agape Ministries, which is from South India, that has moved up into the Himalayas. They provide resources to translate Gaddi language into the Gaddi Bible, to make audio resources of the Gaddi Bible in Gaddi language. And so there's no Ambedkarite Buddhist movement because there are no proselytizers, and there's no ethno-political leaders that have pushed for a Buddhist conversion. What they want, by and large, is to be accepted as Gaddi. And what they want, the way that I look at this is that these spiritual manifestations, these conversions, are not the cause of reservation, but they're in the context of misrecognition from the state. Okay, they're not the single cause. I would never say that person converted to Christianity because they are a Dalit and they want to become tribal. But I would say that there is a broad context of state recognition that shapes spirituality, and we know very little about this. When you look at the main scholars like Alpashaw, Sarah Snyderman, Townsend Middleton, these are the main scholars of affirmative action as it relates to social quotas, the social life of categories. There's very little research done about religion and spirituality, and that's what I would like to do. And this, I'm working on Tibetan stuff now, but right after that, I want to come back to this. I want to understand, why do some communities become Ambedkarite Buddhists, and then others become Christian, others become Radha-Swami, others become Tantra Mantra and join lineages connected to witchcraft exorcism, others join the Byas and then join Radha-Swami, others join Sikhism. I would like to look across India at thousands of groups and be able to make generalizations, and we don't have the data. Nobody really knows. So the simple answer to your question is, we don't know the conditions, and we don't have a theoretical approach to understand how reservation systematically affects spirituality. But I would let Shura, if you have ideas about this, please let me know, because that's why I give these talks, is to talk to other scholars about their research or what their perspective is on this. So if you have feedback, please let me know. Okay, thank you, sir. Professor Vimal Thorat, ma'am. मैम मेरी आवाज आ रही है? मॅडम, सारीपुत्र डॉक्टर सारीपुत्र लांडगेंचा क्वेश्चन आहे याच्यामध्ये चॅट मध्ये. हो सर, हो. Question from Dr. Sariputta Lange. Are there empirical studies on how marginalized groups or caste are affected due to psychological construct like discrimination and the fact that they come from low caste? Vidya, let him. Yes, ma'am. Let give the priority to the other question here. I will talk. Okay. Yes, ma'am. Sangamitra, ma'am. Okay, Vidya, I was waiting for you. Thank you, Vidya. This question by Sariputta Lange. Dr. Sariputta. Thank you so much, Dr. Sariput, for this question. बहुत ही important बात आपने पूछी है, लेकिन जहाँ तक कि मैं बता सकती हूँ आपको, while there are
plenty of studies जिसके द्वारा हम racial discrimination and its impact on psychosocial health को देख रहे हैं. काफ़ी सारा literature है. हमारे संदर्भ में जिस तरह का लिटरेचर आया है कास्ट और हेल्थ को जोड़ता हुआ, वो लगभग डिफरेंशियल्स की बात कर रहा है. अगर आपको ध्यान होगा, मैंने शुरू में बात कही थी हेल्थ इनइक्वालिटीज़ वर्सेस सोशल इनइक्वालिटीज़ इन हेल्थ. तो हमने आम तौर पे जो अप्रोच लिया है कास्ट और हेल्थ को देखने का, वो हेल्थ इनइक्वालिटीज़ के पर्सपेक्टिव से लिया है. तो हमको ये तमाम सारे पर्चे तो बताते हैं कि कास्ट की वजह से ये डिफरेंशियल्स हैं, लेकिन उसकी उस आइडेंटिटी की वजह से जो साइकोसोशल आउटकम्स हो रहे हैं वो बहुत ही कम पर्चों से हमें पता चल रहा है. एक आध जो अभी मैं ख्याल पिछले शायद 5-7 सालों में आना शुरू हुए होंगे, और ज़्यादातर जो यंग स्कॉलर्स के कामों से हमें झलक जो हमें पता चल रहा है वो उस कनेक्ट को ला रहा है. नहीं तो आम तौर पे हम हेल्थ इनइक्वालिटीज़ के तहत ही, और उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं. शुरू में लगभग 2010 में हमारा एक पर्चा है जो 4-5 लोगों ने लिखा था, कास्ट इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेक्शन देखते हुए जेंडर और स्पेस और रिलीजन को लेकर. वहाँ पे हमने थोड़ी सी बात करी थी, पर उसको आगे नहीं बढ़ाया गया था. हमने खुद भी शायद उसको उस नज़रिए से नहीं देखा था. तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि while we have good amount of literature which is connecting racial discrimination and its impact on psychosocial outcomes, caste induced बहुत कम नज़र आता है. हम अभी भी हेल्थ इनइक्वालिटीज़ के तहत ही बात कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत बार डिफरेंशियल्स का ही पता चलता है कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स इस तरह से डिफरेंट है, एक्सेस टू केयर इस तरह से डिफरेंट है. सुश्रुत जादव जी का नाम शायद मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी, जिनका कि काम इस तरफ काफ़ी हद तक के हमें इस तरफ ले जाता है. एंड a couple of other authors also, but directly जहाँ तक मुझे मालूम है इसमें बहुत ही पॉसिटी है इस लिटरेचर में. Probably you've given us a food to think about. Thank you, Dr. Sharma. संगमित्रा जी सर. या योगेश जोगदंड जो कि कास्ट और साइकोलॉजी पे काम कर रहा है, जी 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 जी. उसने इसी वेबिनार पे एक लंबा भाषण दिया. तो उसने कास्ट और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे काफी डिटेल में डिस्कशन किया है. जी जी. ये साहब शायद प्रेजेंट थे नहीं. ओके. जिन्होंने सवाल पूछा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो योगेश है जो काम कर रहा है, योगेश जोगदंड जी, जो दिल्ली IIT में है ना सर. हाँ, आपको तो मालूम है ना. जी जी जी. मैं वही बोल रही हूँ कि रिसेंट 5-7 सालों में थोड़ा कुछ काम आया है जो इस कनेक्ट को देखना है, जिसने शुरू किया है. अदरवाइज ट्रेडिशनली द लॉट ऑफ लिटरेचर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड नॉट सोशल इनइक्वालिटीज इन हेल्थ. तो मैं वो बात इनको बताना चाह रही थी. तो जी, सॉरी. थैंक यू विद्या. Yes, thank you, ma'am. Professor Vimal Thorat. थैंक यू वेरी मच विद्या. सबसे पहले मैं दोनों ही वक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. और उन्होंने जो आज इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, संगमित्रा और स्टीफन ने, वो बहुत ही ज़रूरी था. और इस तरह का ये स्टडी और उनकी जो किताब आई है उससे बहुत लोगों को इससे जानकारी हासिल हुई है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ. मेरा ये सवाल है कि जो संगमित्रा आपने बताया कि जो क्रिमेशन ग्राउंड पर जिन लोगों ने कोविड पेशेंट्स को जलाया, और जब पूरा जो उस प्रक्रिया को जो पूरा कर रहे थे, और जो जिन बच्चों की बात आपने कही कि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे जब स्कूल से बाहर थे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे,
तो उन्हें बुलाया गया उनके मालिकों ने, जिसको अपने मालिक कहा है, तो उन मालिकों ने उन बच्चों के को बुलाकर जो भी जो नदी में जो भी फेंका जाता है, गंगा या तमाम नदियों में जो वेस्टेज फेंका जाता है, उसे वो कलेक्ट करके उनकी आमदनी को बढ़ाया है। तो ये जो इसका कोई आपके पास इसका डेटा है कि क्या इस तरह से उन बच्चों के साथ इतना बड़ा एक जाति की गई है और उसके साथ उन्हें थोड़ा सा पैसे की लालच के साथ ये बहुत बड़ी जाति की है कि उनके एक हजारडस जो बहुत ही कोविड के समय में उनको उसमें डालने की कोशिश की है कि कभी भी वो कोविड से ग्रस्त हो सकते थे और कोविड उन्हें हो सकता था। तो क्या इसका कोई डेटा आपके पास है? तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमसे शेयर जरूर करें। जी सही। विद्या, मैं मैम की इस बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगी। मैम, ये जो हम स्टडी को रेफर कर रहे थे, ये एक माइक्रो स्टडी है जो हम में से कुछ लोगों ने मिलके करी। शुरू हमने माइग्रेंट मतलब ब्रॉड कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर करना शुरू किया था, और जब हम माइग्रेंट वर्कर्स से बात कर रहे थे तब हमें ये क्लीनर्स और जो क्रिमेशन ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं उनसे हम जुड़े। तो करीब हमारे पास 16 या 17 ऐसे लोग हैं जो 3 शहरों में, दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ, इन 3 शहरों में वो शायद हमारा क्योंकि वो ग्रैप सैम्पलिंग है तो इन 3 शहरों से लोग आए हमारे पास। तो इन 3 शहरों में जो लोग दोनों बुरियल ग्राउंड्स और क्रिमेशन ग्राउंड में जुड़े हुए थे, करीब 6-7 के करीब लोग हैं जिनसे हमने बहुत ही इन डेप्थ इंटरव्यूज़ किए हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस वगैरह, कोशिश ये की गई है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम उनसे गैदर कर सकें। तो उसके तहत ही हमें बच्चे जिनके बारे में मैं रेफरेंस दे रही थी, और तीनों ही शहरों में इस तरह के बच्चे हमें मिले कि उन परिवारों में थे ये बच्चे जो ट्रेडिशनली इस काम से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें लगा कि हम बच्चों को इस काम में नहीं लगाएंगे, इसलिए उनको पढ़ने भेज दिया गया था। लेकिन अब चांस की बात है कि स्कूल में जाना नहीं है बच्चों को, और जिस तरह का क्या बोलना चाहिए, जो जिन्हें ये नाम दिया जाता है मालिक, बिकॉज दे आर द वंस कि इनको ये ले जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के तौर पे, और इनके जो मेल मेंबर्स हैं सीनियर्स से, उनसे काम पिताजी, चाचा, बड़े ब्रदर वगैरह को इस काम में लगाते हैं। तो इन बच्चे, द यंगेस्ट इज सिर्फ 16 साल का बच्चा है वो, और वो दिल्ली का बच्चा है। तो उस बच्चे, इनफैक्ट हमारा नैरेटिव इस बच्चे का है, और 2-3 बच्चे और बाकी के 2 शहरों के हैं। तो वो बहुत ही क्लियरली हमको बताते हैं कि हमको सुबह के 3 बजे उठा लिया जाता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लाशें आई हुई थी कि दफनाने के लिए काफ़ी लोग नहीं थे। तो अब हम आंखें मलते निकल के आते थे, और चूंकि एक धमकी थी कि अगर आपने अपने बेटे को भेजा नहीं तो अगले का पैसा आपको नहीं मिलेगा। मैम, उसमें मैं जो कह रही थी, नॉर्मल टाइम्स में क्या होता था कि डेड बॉडीज यूजुअली कपड़े उनको पहने हुए होते हैं, शायद कुछ गहने वहने भी पहना के उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। वो चीज़ें इन लोगों को जो जब ये स्कैवेंज करते हैं राख को, या जब पानी के नीचे से वो उन चीज़ों को निकाल लेते। कोविड के दौरान ये हुआ कि नॉर्मली जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको कोविड डेथ बॉडीज़ के करीब भी जाने नहीं मिलता था, तो ये सारी चीज़ें और होने की गुंजाइश नहीं थी, और अबैंडन बॉडीज़ भी बहुत सी थी। तो उसके तहत ये जो आमदनी कोट अनकोट उनकी हो जाती थी, वो नहीं हो रही थी। और दूसरा ये था कि बावजूद इसके कि जो क्या बोलते हैं, ये जो इनके मालिक थे, उन्होंने तो 4 गुना 6 गुना पैसा बढ़ा दिया था। जो ऑन एन एवरेज 6 से 7-8 हज़ार में काम उनका होता था, वो अब करीब 4-6 गुना ज़्यादा बढ़ा के किया गया। उन्होंने तो पैसा बनाया, लेकिन इन वर्कर्स की आमदनी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बावजूद इसके कि उन्होंने पूरा नॉर्मल से ज़्यादा टाइम दिया, अपने बच्चों को भी उस काम में लगाया। तो इसका डेटा है मैम, we've tried to do a qualitative analysis of ये जो हमारे पास 16-17 केसेस हैं इस तरह के, वो हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके वक्तव्य से पता चली है कि मतलब
फिर कास्ट सिस्टम को फिर से यहाँ पर मजबूत करने की ये कोशिश की गई है कि जो बच्चे स्कूल में हैं उनको फिर दोबारा उसी काम में लगाकर पैसे के लालच दिखाकर या उनसे धमकी से काम ले कि कॉन्ट्रैक्टर तो धमकी देते ही है। जैसे स्कैवेंजिंग कमेटी जो सफाई का वर्कर्स है, सफाई जो कर्मी हैं उनको जबरदस्ती ले जाते हैं, मतलब उनको कभी कभी मार पिटाई करके भी ले जाते हैं। ये दिल्ली की बात मैं बता रही हूँ क्योंकि बड़े समय से हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच संघमित्रा ये जानकारी के लिए। और दूसरा सवाल विद्या मैं पूछ सकती हूँ? दूसरा सवाल स्टीफन से। यस यस पूछिए। हाँ, स्टीफन has very much it's a brilliant presentation. Thank you very much, Stephen. And you related the discrimination and the mental torture in that sense, mental torture, and that mental torture and mental discrimination is has got the impact on the Dalit community or ST community. I like that point. Can you a little bit elaborate how you visualize or monitor this psychological impact on these people because of the caste and their discrimination on the basis of their caste or their background, social background? Yeah, thank you so much for that question. That's great. I look at idioms of distress, which means communities facing discrimination have social and cultural idioms that become relevant to them. So, for example, I look at witchcraft manifestations among certain Dalit groups. Why do Dalits have more witchcraft possession? Why do they have more torment? Why do they have sustained histories of witchcraft oppression? And I look at other aspects that related to idioms of distress. So, for example, in the chapter I submitted, I followed one of my closest friends. I followed him for 6 years as he tried to change his caste from Arya to Hali. Hali is a SC caste. Arya is a general caste. I followed him to the revenue record office. I followed him to bribing officials. I was there when he was bribing officials. He brought ghee, 5 kilos of ghee, to try to bribe an official. I followed his distress over years and years. And what was happening to him is that he was in the library, the district library in Dharamsala, trying to pass different exams. He wanted to be a Patwari. He wanted to join this group, that group, and he was failing all of these state exams. However, if he had reservation, he would have passed several of those exams. Because he was in the general quota, he was failing. And so here's a case where he's trying for years and years to communicate. You know, in Himachal, it's very complicated because the land records are in Tankari language. So you can't read them yourself. You need a Tankari expert to read the revenue records. So you go to the Tankari expert, but you have to bribe him to find your file. And you're trying to prove your caste using land acquisition records. But Dalits were given land through the Bandobast, and there's very few records of that. So I followed the mental anguish of this kid. He's a young guy, you know, he's a kid. He's in his 20s, trying to pass the state exams. He has to prove he's a Dalit. He has to go through all of these levels of administration, and it's humiliating for him. It's purely humiliating. The language he used, the experience, he's proving he's a Dalit, and he's failing to prove he's a Dalit. Very humiliating for him because he doesn't want to identify with being a Dalit. He wants to be identifying with something completely different as a Gaddi. So the humiliations are there, and there are other. My work is small,
But people like Brigupati Singh, he published a wonderful book. What is it called? Quest for Life or something, with some of the in Rajasthan, with some of the former, you know, like primitive tribes. Somebody like Nate Roberts wrote a fantastic book called To Be Cared For, about a slum in a Christian slum and Christian conversion among slum dwellers in Chennai. So there's a lot of ethnographic material that's all about humiliation, the humiliation of caste. And that's kind of a new thing, that in the past 10 years there's been a return to the psychology of caste. And one more thing I'll mention, there's another scholar, what is her name? Anyway, I forget her name, but she wrote this fantastic article about how SC and ST have become humiliating titles, and how, as caste practices have gone down, which is good, there's been a change in emphasis where people identify being SC or ST with humiliation and with discrimination and with marginalization. So it's become an idiom that when you say that you're an SC or an ST, when you accuse that of somebody else, that's a kind of slander to them. And so there's all kinds of humiliations in the titles, in the representations, in the way in which people are petitioning the state to join these groups. At the very heart of this is a paradox. People want to be modern Indian citizens, and to do that, they have to prove that they're backwards. They have to prove that they're tribal, that they're Dalits. They have to prove their discrimination. They have to prove their status. And there's a kind of paradox that's humiliating, that to be a modern citizen, you have to demonstrate to the government that you're actually backwards, you're primitive, you're discriminated against. That process is inherently humiliating for many people. Yeah. Thank you, Stephen. Thank you. Thank you so much, Vimalji. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. किसी का सवाल है? और सांगराज सर, आपका कोई सवाल है? Yes, I put it in the chat box. It was not for everyone. My question was in that box that is there the caste-wise or social group-wise difference in terms of persons affected by the COVID, and also number of deaths by COVID. If you don't have absolute number, or just you can say that, you know, based on your experience or observation, you can explain this question. Sorry. I didn't get the point, sorry. I'll repeat it again. Yeah, please. The question is, number of persons affected by COVID-19, number of deaths, and is there any differences among the social groups? This is the question. Yeah, that the point I was making, sir, that as far the data goes, these differentials are evident only from the micro level studies and crowdsourced data that is available to us. No state level data is giving us this disaggregation. As far as I know, Maharashtra and a couple of other states have given the difference by gender, not beyond that. So to be able to categorically say the differential vis-a-vis the social group, as of now, one has to rely only on the micro studies and the crowdsourced data. So that's the point I was making, that there is a need to be able to collate data, because data is available. It's just that when it's being put on the public platform, the disaggregated data is not available to us for
for any kind of policy making, we do need disaggregated data for the purpose. Sir, as of now, this is what we have for COVID. We only know total deaths for that matter, at the most men and women. Some states have gone by age also. Maharashtra is one of them. Okay, thank you, ma'am. मुझे ऐसे लगता है अभी कोई सवाल तो नहीं है. Vidyaji, I posted a link to an article by Clorinda Still, and this refers to the last question about empirical evidence of humiliation connected to Dalit caste identity. So this article is fantastic because it talks about how, as casteism changes, it has shifted to SC and ST itself, that the use of the title SC, ST is itself used in a pejorative and discriminatory way. So I encourage people to check out this article. It's great. Okay, sir. We save it and then we'll share our WhatsApp groups also. Thank you so much, sir. Great, thank you. Thank you, both of respected guests. Thank you so much. आपने बहुत ही सरल भाषा में और सरल तरीके से और संवेदनशीलतापूर्ण इस विषय को हमारे साथ अभ्यासपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं. मैं इस चर्चा को धन्यवाद देने के लिए मिस्टर मिलिंद पठाड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, NH कॉलेज ब्रह्मपुरी, आपको सादर इनवाइट करती हूँ सर. मिलिंद पठाड़े लगा. Hello, Milind sir. Milind Pathade sir. Can you hear me? Hello. Milind Pathade sir. Hello. हेलो, आ रहा है आपको? Yes sir, audible. Yes, thank you, ma'am. Good evening to all of you. It's my privilege to present a vote of thanks on behalf of Association of Social and Economic Equality. Today, we have organized a webinar on COVID-19 and marginalized groups, health status, impact, and policy safeguards. I extend my gratitude to the chairman of the webinar, Honorable Professor Sukhadeo Thorat, for his valuable talk. He has contributed contemporary issues of Indian society in pandemic time. I would like to thank our speaker of the webinar, Honorable Professor Sangamitra Acharya ma'am, for his precious, thoughtful, and intellectual talk on the subject. I'm also grateful to the speaker, Honorable Stephen Christopher, for his intellectual talk with valuable references in Indian social context and abroad. I express my thanks to all the participants who joined from different cities of the India and abroad. I am thankful to Ms. Lakshmi Mane from Pune and Samar Aziz who have introduced our guest. I'm thankful to all the participants who have participated and in the question answer session. It's my duty to thank the organizer of the webinar, Professor Dr. Vimal Thorat ma'am, Professor Dr. Trilok Hajare sir, Dr. Gautam Kamble sir, for this fantastic organization. I'm thankful to Vidya Chorpagar ma'am
who nicely conducted this program. And last but not least, I express my thanks to the technical assistants. Okay, thank you very much for this nice seminar. Over to Vidya ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, all of you. Sir, Professor Thorat, sir, shall I end the meeting? Okay, ma'am. Yes, we can close now. Okay, Vidya? Yes, sir. We can close now, I think. The concluding is over, sir. Vote of Yeah. thanks. Yeah. Yeah. Thank Okay, you. sir. Okay. Thank you. Everyone. Thank you. Okay, Sangamitra, bye. Bye, sir.